Okay, so now first chapter is your introduction to Internet of Things. Okay, in this we are basically going to study uh, what is Internet of Things and what is Internet of Everything. So there is a small difference between Internet of Things and Internet of Everything. And then we will be going to study the generic block diagram of Internet of Things. And next, in that, we will be going to study the protocols which are being used in Internet of Things. Then next, we will be going to study the IoT identifiers and then the technologies which are being deployed currently in the Internet of Things. So now, before that, we will see the definition of Internet of Things, what is exactly the Internet of Things is. So it's basically you can see that the Internet of Things is a network of physical objects uh, or things that are being embedded with sensors, softwares, and connectivity that enable them to collect and exchange data. So that is basically an Internet of Things. Uh, it is a part of internet which has been evolved uh, in different manner. So now basically what Internet of Things in example which we are using currently in the day-to-day life, that is the fitness band, which basically monitor the heartbeat and steps that sends the data to your phone. Then there is a smart refrigerator, which gives a alert message if any product is running low. For example, a milk product is in the refrigerator is going to over, so the user will come to know that we need to purchase milk. Then next, smart traffic lights, that is again the adjustment of the traffic in real time manner based on the congestion, the traffic time or traffic signal will be changed. Okay, so these are the examples of Internet of Things which is currently prevailing right now. So this I can see you basically the 1% of the work in Internet of Things area. So that means there is around 99% scope is available for the systems or things to be connected over network. So you can see, imagine there is a lot of scope or work or research are being going on, and which will be basically a very huge area for the researcher to do. So now we will see how the basically the internet gets evolved. Now, first you can see that is the connectivity of people. First, internet was evolved to connect the people via email, web browser, and search engine. This was the first era in which the internet was connected, and the main object of that particular thing was a people to people connection. That was the first internet thing happened, in which the people were connected with each other through email, web browser. Later on, the process evolved, and then there is a new phase of connection established where the e-commerce platform comes into picture and the supply chain management started. अब यहाँ पे क्या मेन इंपॉर्टेंट क्या हो गया, the products which were sold in the retail shop or in a market or in a shopping mall, they were put it on the internet, and then the e-commerce evolved. Then again there is a retail shop gets connected with the people. Now again there is a sell of product started in online mode. Then again it's become a business is being evolved over internet. Now the business have taken over the internet area. First the people were connected, then the business model get connected over the internet. That is called as network economy. Later on, again there is a very huge demand of the sources like the media communication.
video communication, then the advertisement communication. These all comes into picture, and then there is a next communication established, that is a social media, where the people share their videos, their day-to-day connect data, which is being uploaded on the cloud, and then the cloud network gets evolved, and then the uh, different communication, advertisement media, and everything were on the internet. So this is the immersive experience where the people share their experience through social media platforms. They chat, they send their photos, images, videos, and they started online lecturing system also, where the where the things were taught in the online manner. So these are the immersive experience where the things were propagated on over the internet. Then next, the Internet of Things gets evolved, where the devices started communicating with each other. See, the first was the communication between the people to people. Now, here the communication started between the people to a machine, machine to machine. Okay. And there is a huge amount of data is being uh, recorded and saved on the cloud. There the Internet of Things comes into picture, where the machine to machine communication happens, between machine to people communication happens. And now you can imagine there are a lot of many objects, products are available, and those products are being available, are going to be available on internet. That means remotely we can control any devices. Slowly it is happening. We are seeing that many things can be controlled remotely now. And I can say that currently only 1% of these objects are available over internet. That means there are a huge chunk of devices are going to be converted or going to be connected over internet now. This is how the intelligence connections are happening. You can see the different types of evolution is happening over internet. So now you can see the history of IoT, which started with lay back in 1982, where when the Coca-Cola vending machine uh, was first IoT-like devices, which gives the availability of the Coca-Cola can in the machine, as well as the temperature of the Coca-Cola can in the vending machine. So that was the data which is being transferred, and based on the availability of the Coca-Cola can in the Coca-Cola machine vending machine, the filling of the can in the vending machine was happening. Means the vending machine is empty, it gives an alert message to the vendor. The vendor will come back and fill the Coca-Cola can in the Coca-Cola can in the vending machine. This was the first IoT like device was evolved in 1982. Then second, first IoT toaster was connected to the internet in 1990. And then similarly the IoT coin, then next more things started, then connected people connected to the internet. These all are happening year by year. Now million billion of devices will be going to be connected in worldwide over the internet. Now these are the some images examples which are being having connection over the IoT devices, like home appliances. Smart TV can be connected, refrigerator, smartphones and computers are connected through IoT devices. Wearable like Fitband, then automobiles, car is also connected over internet. Then energy system, sustainable energy, like how much energy is being generated, that all being recorded over the IoT devices. Similarly, you can have a retail shop, which is again IoT devices, printer, then industrial machines, healthcare systems, then surveillance cameras are being connected with the are being included under IoT devices. Now these are the some devices which are being implemented and which are being called as IoT devices. Now you can see this is a range of graph which is going to be increasing day by day, the number of objects which are being going to be connected or are connected over the internet of as on internet. So you can see the billion of smartphones are also connected over internet. Your devices were connected in 2003.
Now billion objects are being connected over internet now. Now what actually the internet devices are having? Now this is a basic building block of IoT devices, where you can see the connectivity is through USB or Ethernet. Then there is a memory interfaces. Then there is a graphic connection is there, graphic block is there, processor which processes the instruction or programs. Then audio video connections are being available. Then storage interfaces like MMC card and SDIO card. The next sensor interface are available, which are being connected to different protocol, UART, that is asynchronous receiver transmitter protocol, then SPI, I2C, internet control protocol, CAN protocol. These are the protocol which are being used to connect the sensors. Now, this is a basic building block of an IoT device. So, एक IoT devices के पास इतने सारे circuits होते हैं, and this one particular block becomes a IoT device. Now we will go through the characteristic of IoT devices. Now, what different main characteristic of an ordinary devices? IoT different from ordinary devices. First of all, it provides connectivity. Devices are connected to the internet. This is the first characteristic. Second is sensing. Devices can collect information from the internet environment. Then data processing. Information is analyzed to make it useful. Automation and control. Devices can act automatically or be controlled remotely. So this is a very important IoT characteristic which helps or which differentiate from the ordinary devices. Further, we can go ahead with the what ability IoT devices should have. The very much important dynamic and self-adapting. ये characteristic होना बहुत जरूरी है. That is, it should adapt dynamically with the changing context and take action based on their operating conditions. So it should be dynamic. It should take decisions based on the data being collected, and after the data whatever be being collected, it analyze that data, and after doing the analysis or processing, it take necessary action to operate that conditions. So this is a very important characteristic IoT devices should have. Then second is self-configuring. See, allowing large number of devices to work together to provide certain functionality. Now, this means what? When we are connecting a IoT hub will have many devices connected to it. Okay. So suppose, for example, a particular device start malfunctioning, we replace it with the new device. When the new device is placed, there should be an ability to adapt that devices. It should self-configure that device. So that is a basic characteristic or important characteristic of IoT. And the next is interoperable communication protocol. Now it should support number of ICT protocol and can communicate with other devices. We will see what all different communication protocol being available, and it should support, because there are many type of protocol communication protocol available, and our IoT devices should have the ability to use that communication protocol for exchanging of data. So these are the important characteristic an IoT devices should have. The next is important unique identity. Each IoT devices should have a unique identity and unique identifier, such as an IP address or an URL. So again, unique identity होना चाहिए, because whenever we connect any devices on the internet, हर device का एक IP address होना चाहिए जिससे वो उसको पहचान सके, डिवाइस को आइडेंटिफाई कर. So that unique identity is the requirement which is to be maintained by the IoT device. And next is integrated into information network. Now IoT devices should be integrated into the information network that allows them to communicate and exchange data with the other devices and systems.
So again, it should be integrated, means the connection protocol, connection devices और जो भी information network पे communication के लिए required है, वो सारे devices में integrated होना चाहिए. Then only it becomes a compact and a very smaller IoT devices which can be installed anywhere in a system. So these are the five characteristics an IoT devices should have. First one, dynamic and self-adapting. It should adapt based on the data collected. Self-configuring. Whenever any devices get malfunction and new devices is installed, it should configure it automatically. Interoperable communication protocol, ICT protocol, whatever protocol is available, it should be able to communicate. It should support those ICT protocol. Unique identity, it should have provide a unique identity. It should be able to give an unique identity by using some IP address. There are RFID code are available. Then there is a Q barcode is available for identifying any devices. So there are many methods are there which we are going to see. Then next, integrated into information network. It should integrate, the devices should be integrated into information network that allows them to communicate. That is important. So these are the five characteristics of IoT, Internet of Things system should have. Now going ahead, what all protocols are available, and we can see the layers are available in IoT protocol. So there are three layers are available. You can see the OSI model you have already studied in the network system. Similarly, in this IoT, there are three layers are available: application layer, transport layer, and network layer. And these layers are function are similar what you have studied in the communication network, that is OSI model. Now we will see one by one. That is the network layer and link layer. These are the four layers are available, and we will see all these four layers of protocol. The first one is the link layer. Again, you know what is the purpose of link layer. Purpose of link layer is to determine how the data is physically sent over the network, that is physical layer or the medium. Networks, physical layer or medium. So there are various link layer protocol available. These all protocols you are known to it. The same protocols we need to use in IoT system also. First one you have seen 802.3, that is Ethernet protocol. This was the first protocol which was developed in link layer, that is 10 base 5, that was using coaxial cable. The data which is to be sent through physical channel, physical layer was through coaxial cable, and that base 10 base 5 protocol was used, that is Ethernet protocol. The next 802.3.I, that is Ethernet over copper twisted pair connection cable. Now after that coaxial cable twisted pair cable was used, so over that we were using 802.3.I. Then after that 802.3.J, which is Ethernet over fiber. Now optical fiber communication is being used, connection is used. For that 802.3.J, that is 10 base F Ethernet were used. Now in this, the data rate was between 10 Mbps megabits per second to 40 gigabits per second and higher. More than that, because of the optical fiber, the speed can be more than 40 gigabits per second. The next protocol which was used was Wi-Fi, that is 802.11. This you have studied in wireless communication in your undergraduate duration. That is 802.11 is a collection of wireless local area network, WLAN communication. Under that, there are different versions are available, which is operating at different bands. The wireless communication happens in the particular range or band of frequency. तो उसमें पहला क्या था 802.11a, that is 5 gigahertz band. Then 802.11b and 802.11g operate in 2.4 gigahertz band. Then 802.11n, which works in both 2.4 and 5 gigahertz band. And then 802.11ac, that is 5 gigahertz band. And
802.11ad, that is 60 gigahertz band. So these are the Wi-Fi related bands which are available, or you can see the versions are available, which is having different communication band. Then next is the WiMAX, which is used for the wire station, that is fixed wireless communication station, which is having a data rate of 1.5 megabits per second to 1 gigabits per second. And you can see that 802.16m provides data rates of 100 megabits per second for mobile station, that is movement WiMAX devices, and 1 gigabits per second for fixed station. The next protocol which was used was for low rate wireless personal area network. Now, low rate wireless personal network band was 802.15.4, in which Zigbee is an example which was used. Low rate power wireless power area network, because Zigbee takes very small amount of power, low power, to transmit the data, which is having a fixed range, that is, it covers around 30 to 40 meter range. Zigbee covers 30 to 40 meter range in which the data can be transmitted. And the data rate was between 40 kilobits per second to 250 kilobits per second. The next communication protocol in comes under link layer was 2G, 3G, 4G mobile communication. Now 2G, you know, it is a GSM model and CDMA. 3G is UMTS and CDMA 2000 model. 4G is LTE, long-term evolution model, and data rate is from 9.6 kilobits per second for 2G to 100 megabits per second for 4G. Now, why we are reviewing these link layer protocol? This link layer protocol you've already studied, but this link layer protocol we will be using depending upon the applications. Suppose, for example, if you take a we will study with the example once again. First we cover with the protocols, and then we will understand where this different protocol of link layer can be utilized. Next, after link layer protocol, I think you know about the link layer protocol in detail. It just converts the it converts a packet in a packet form, and then it is converted into binary bits, which is being transmitted through physical layer. And physical layer is nothing but the connection cable medium which we are going to use. Either we are using a wired or wireless. If we are using wired, so this 802 to 802.3.j will be used. Okay, the data will be transferred, which is compatible to be transmitted through wired communication. If we are using wireless communication, again the protocol, that is a link layer, will convert the packet in the format which is compatible to be transmitted to wireless communication, that is Wi-Fi. So each standard which is being given by IEEE has got a specific data format, and in that data format the link layer will be going to convert the data. Packet will be formed, and after that packet will be converted into a binary bits, and that binary bits is being transmitted through the physical layer, that is wired or wireless. Now next is the transport layer protocol. Again, you have heard about transport layer protocol. In this you can see, which has got a very important function. It provides end-to-end message transfer capability independent of the underlying network. What type of network it is? It is not required to be understood by the transport layer. Whether it is a wired network or it is a wireless network, it is not to be taken care by the transport layer. Transport layer is only used to transfer message without any dependency of the network. So it also provides very important functions which you have already studied, that is error control, then segmentation, flow control, and congestion control. So these are the important functions which transport layer protocol does. And under this, you can already study two protocol, that is transport control protocol
which is connection oriented. Yes or no? That you have studied, which provides data from one point to another reliably. Reliably means what? You get the confirmation that the data have been transmitted to the to the destination. Okay, that means in your TCP protocol, it is a guaranteed delivery of the messages. And second one is user datagram protocol, connectionless. Connectionless means initial connection is not required. It just sends the data. Okay, and therefore it becomes very lightweight protocol. And it is useful, perfect for small system only. It becomes a postcard type. आपने पोस्ट कार्ड भेजा, लेटर बॉक्स में पोस्टमैन के थ्रू पोस्ट कार्ड गया, डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी पोस्ट कार्ड मिला कि नहीं मिला. So therefore it is called as connectionless protocol, UDP. So these are the two protocols which you have studied in OSI model also, and which comes under transport layer protocol. Now, very important functions you have seen, it provides the error control. Segmentation means what? It divides the packet into small segments. The entire message is divided into small packets, segments. Then flow control is being maintained. Okay, and the congestion control. Sometimes the network traffic is to be handled. So that all functions is done by transport layer protocol. The next is the application layer. Now again, it is just a user application which we are going to use. Under that, you can see various protocols are being available. First one is HTTP protocol, that is used for World Wide Web, for internet browser. Then constrained application protocol, COAP, which is required to be used between machine to machine communication. That is client server architecture, which follows client server architecture. Then socket, again, it's a full duplex communication. Then next, message queue telemetry transport protocol, MQTT, which is a light message protocol based on publish subscribe model. We will see publish subscribe model in the further slide. Then next is protocol extensible messaging and presence protocol, which is used for real-time communication and streaming XML data between the network. The next, data distribution service, which is data-centric middleware standard for devices to device or machine to machine communication. Then last protocol, advanced message queuing protocol, AMQP, is an open application layer protocol for business messaging. So these are the 7 protocols which are available for IoT under application layer. The function of this application layer is to interface the lower layer protocol to send data over the network. Now, we will see one example. And can you tell us that if suppose we are going to make a small soil moisture sensor, we need a IoT device, IoT system in which soil moisture is to be measured through the sensor. Now the system is having a small battery and only need to send little data. Either soil is dry once an hour. मतलब हमें एक सिस्टम बनाना है स्मार्ट
सॉइल मॉइस्चर सिस्टम। सॉइल है, उसका मॉइस्चर लेवल हमें मेजर करना है, और मेजर करके उसका इंफॉर्मेशन हमें सेंड करना कि क्या सॉइल ड्राई है या वेट है। तो उसके लिए हमारे पास एक ह्यूमिडिटी सेंसर होता है जो हम उसमें प्लेस करेंगे, और ह्यूमिडिटी सेंसर जो चेक करेगा मॉइस्चर लेवल ऑफ दी सॉइल, और मॉइस्चर लेवल को सेंस करके वो बताएगा कि फार्मर को या कोई एंड यूजर को रिमोटली दैट सॉइल इज ड्राई, वी नीड टू टर्न ऑन दी पंप, मोटर ऑन करना है, पानी सप्लाई करना है, ताकि वापस से सॉइल में मॉइस्चर लेवल आ जाए। मतलब वेटनेस जो रिक्वायर्ड है, पानी का जो गीलापन है वो होना चाहिए। तो अब इसके लिए आप ये हम लोग डिफाइन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि हमें लिंक लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा। यस, ये स्टूडेंट कुछ बता सकते हो आप लोग कि हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करें। हमारा सिस्टम बहुत छोटा है, हमने खाली स्मॉल एरिया में प्लेस किया है, ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं हमें रखना है, क्योंकि फार्मर वहीं पे नजदीक ही रहता है, उसके पास घर पे मैसेज आ जाना चाहिए, मतलब इट इज विद इन द एरिया ऑफ 100 मीटर एरिया। और वो उधर जाके चेक करने के बजाय वो घर पे बैठे बैठे वो चेक करना चाहता है कि सॉइल का लेवल, मॉइस्चर लेवल क्या है। यस, तो आप लोग ये लिंक लेयर के प्रोटोकॉल देखें, एक तो वायर्ड है जो इथरनेट लैन केबल लगा सकते हैं, लेकिन इथरनेट लैन केबल के लिए वायरिंग का प्रॉब्लम, लंबा, वो सब घर तक लेके जाना डिफिकल्ट हो जाएगा वायर। अगर वायर घर तक लेके जाना है तो फिर वो खेत में से सब कनेक्शन, वो सब बहुत प्रॉब्लम होगा, डिस्टर्बेंस होगा, वायर के डैमेजेस, क्योंकि डिस्टेंस कम है लेकिन वायर सुटेबल नहीं होगा। दूसरा हमने देखा है कि लिंक लेयर प्रोटोकॉल है वाईफाई। अब वाईफाई क्या होगा कि वो जहां रहता है वहां पे वाईफाई का कनेक्शन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उधर होगा नहीं होगा हमें नहीं पता। तो वाईफाई भी मुझे नहीं लगता यूज हो पाएगा। तीसरा है जो है लो रेट डेटा कम्युनिकेशन वायरलेस प्रोटोकॉल, जिसको इंटरनेट का कनेक्शन की जरूरत नहीं है। तो वहां पे हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया जिगबी, तो अगर मैंने जिगबी कनेक्ट किया और फार्मर के घर पे जिगबी का रिसीवर मॉड्यूल लगा दिया है, तो वो छोटे डिस्टेंस में उसका कम्युनिकेशन हो जाएगा, 30 से 100 मीटर तक के रेंज का। तो लिंक लेयर प्रोटोकॉल में हम लोग जिगबी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमें देखना है कि ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल कौन सा यूज करना है। अब देखो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर में दो प्रोटोकॉल दिया हुआ है, एक है टीसीपी प्रोटोकॉल और दूसरा यूडीपी प्रोटोकॉल। अब टीसीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड, मतलब दोनों बाजू कनेक्शन चाहिए। दोनों बाजू कनेक्शन का रिक्वायरमेंट कब होता है, जब हम डेटा दोनों बाजू से सेंड करना चाहते हैं। लेकिन ये मेरा जो सिस्टम है इसमें खाली हमें फार्मर को मैसेज चाहिए, बाकी कुछ नहीं, कि मॉइस्चर लेवल क्या है, कम है, मुझे आके पंप चालू करना है कि नहीं वो देखना है। तो इसके लिए हम लोग यूडीपी प्रोटोकॉल यूज करेंगे, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल क्या बोलता है कि मैं मैसेज सेंड कर दूंगा, यूजर को मिल जाएगा। तो उसने पैकेट सेंड कर दिया कि भाई ये मॉइस्चर लेवल है, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का के थ्रू, मतलब सॉइल का। ठीक है, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल कौन सा यूज करेंगे। अब जैसे हम टीसीपी तो यूज नहीं कर रहे हैं, तो इंटरनेट ब्राउजर ये सब तो होगा नहीं, तो हमें ये सब प्रोटोकॉल तो यूज नहीं कर सकते, एचटीटीपी प्रोटोकॉल तो नहीं यूज कर पाएंगे क्योंकि टीसीपी प्रोटोकॉल नहीं यूज करे। एचटीटीपी एचटीटीपी प्रोटोकॉल इज ओनली वर्क्स विद टीसीपी प्रोटोकॉल ओनली। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो अदर प्रोटोकॉल है, जैसे एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल,
मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री प्रोटोकॉल, या तो COAP where machine to machine communication is required. So either of these two protocol, one protocol can be used for in application to send the data. तो इस तरीके से हमें एक IoT डिवाइस की सिस्टम में जो प्रोटोकॉल्स है लेयर बाय लेयर हम समझ सकते हैं। तो हमने देखा कि स्मार्ट सिस्टम हम बना रहे हैं सॉइल मॉइस्चर मेजर करने के लिए, एंड इन दैट वी हैव कैटेगराइज which protocol is suitable for this particular IoT device. The first link layer protocol, and link layer protocol gives us depend upon the application we can decide which protocol is suitable, wired or wireless, and in wireless wired उसका सुटेबल वायर का कनेक्शन होगा कि नहीं होगा वो सब हमें देखना पड़ता है। फिर दूसरा वायरलेस, वायरलेस के लिए भी हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या उधर इंटरनेट सर्विस है कि नहीं। वाईफाई हम तभी यूज कर सकते हैं जब इंटरनेट सर्विस अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे इसलिए हमने डिसाइड किया कि ये सिस्टम के लिए जिग्बी सफिशिएंट है, और ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल में हमने देखा यूडीपी इज गुड बिकॉज वी आर यूजिंग वाईफाई सिस्टम और इंटरनेट इथरनेट सिस्टम जिग्बी यूज कर रहे हैं, तो वहां पे यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज सफिशिएंट। And last application protocol, again we are doing machine to machine communication, so therefore we are using MQTT or CUAP protocol. So in IoT system you can see we have got these layers are available: link layer, transport layer, application layer. One network layer is there, but under that IP address is there that you already know. We are using IPv4 or IPv6. Now coming to the communication model which are available in IoT. This is again very important. What are the different models are available, communication model available in IoT? The first model is request response communication model. Now in this you can see the client server communication is there, in which the client sends request to the server and the server responds to the request. तो client यहाँ पे request भेजेगा और server response करेगा. When the server receives a request, it decides how to respond and fetches the data. It receives the resources representation, prepares the response, and then sends the response to the client. So यहाँ पे request दिया जाएगा, server response करेगा कि I am ready to give the data. So it interprets with the resources available or connected to it. From those resources, it prepare a representation which is to be sent to the client. So you can see that request response is a stateless communication model, and each request response pair is independent of others. Okay, so there is one client, there are many clients, their clients will have different requests, and based on the resources available at the server side or connected to the server side, the server will give the response to that client. So you can see that there is no interconnection, they are independent to each other. Yes or no? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग इंटरनेट यूज करते हैं, आप वेब ब्राउजर पे गूगल टाइप करेंगे, मैं वेब ब्राउजर में जीमेल टाइप करता हूं, तो देयर इज अ डिफरेंट रिक्वेस्ट गिवन टू दी गूगल सर्वर. अब गूगल सर्वर में देर आर मेनी रिसोर्सेज आर अवेलेबल. वन इज गूगल सर्च इंजिन, जीमेल, देन देर आर मेनी जेमिनाई, मेनी रिसोर्सेज आर अवेलेबल. नाउ जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है वो क्लाइंट के रिक्वेस्ट के हिसाब से उसके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल वो रिसोर्सेज उस क्लाइंट को देता है. तो आपने गूगल को पिंग किया, मैंने जीमेल को पिंग किया, आपका रिक्वेस्ट अलग है, मेरा रिक्वेस्ट अलग है. मुझे जीमेल का डिटेल्स आएगा, आपको गूगल का सर्च इंजन का डिटेल आएगा. तो इस तरीके से रिक्वेस्ट के हिसाब से सर्वर उसको
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो दिस इज अ वन टाइप ऑफ रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल अवेलेबल इन IoT system. Now second is publish subscribe communication model. Now what is publish subscribe communication model? Now in this you can see there is a publisher, and then there is a brokers, and then there is a consumers are available. Okay. Now publisher are the source of data. Publisher send data to the topic which are managed by broker. Publisher do not know about what are the subscribers are available. तो कंज्यूमर क्या करता है, सब्सक्राइब करता है ब्रोकर के साथ, ठीक है, टू द टॉपिक, जो टॉपिक उसको चाहिए। एंड व्हेन द ब्रोकर रिसीव द डेटा फ्रॉम द टॉपिक फॉर अ टॉपिक फ्रॉम द सब्सक्राइबर, depending upon the subscription the data will be provided. Okay, so when the data is received, now यहाँ पे पब्लिशर है, वो डेटा दे रहा है टॉपिक वाइज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट सेंसर्स लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मॉइस्चर सेंसर है, यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर है, यहाँ पे वोल्टेज सेंसर है, करंट सेंसर है, ये सब सेंसर्स यहाँ पे कनेक्टेड, वो लोग कंटिन्यूसली डेटा दे रहे हैं। और ब्रोकर के पास टॉपिक ए, इस टॉपिक ए में आ रहा है वोल्टेज का डेटा और टेम्परेचर का डेटा, और इस टॉपिक बी में आ रहा है यहाँ पे मॉइस्चर का वैल्यू आ रहा है, ह्यूमिडिटी का वैल्यू आ रहा है। अब ये डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। अब सब्सक्राइबर वन ने जो है वो इसको सब्सक्राइब करके रखा है टॉपिक ए को, मतलब दिस सब्सक्राइबर नीड्स द वोल्टेज एंड करंट वैल्यू जो इसमें स्टोर हो रहा है। सब्सक्राइबर टू है जिसको ये दोनों का वैल्यू चाहिए, मतलब उसको वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर चारों वैल्यू चाहिए। और सब्सक्राइबर थ्री है जिसने सब्सक्राइब किया है कि मुझे खाली मॉइस्चर और टेम्परेचर का वैल्यू दो। तो डिपेंडिंग अपॉन दी सब्सक्रिप्शन डन, यहाँ पे जो कस्टमर है उन्होंने जो जो सब्सक्राइब किया है उस चीज की उनको सर्विस मिल रही। तो यहाँ पे पब्लिशर है जो सब डेटा कलेक्ट कर रहा है, ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ दे रहा है, टॉपिक ए में दे रहा है, टॉपिक बी में दे रहा है। अब टॉपिक ए किसको चाहिए वो सब्सक्राइबर वन ले रहा है, टॉपिक तो सब्सक्राइबर टू कौन सा ले रहा है, टॉपिक ए और टॉपिक बी दोनों का डेटा ले रहा है, और सब्सक्राइबर थ्री ले रहा है खाली टॉपिक बी का डेटा। The depending upon the request done by the customer, the data or information will be provided. So this is called as publish subscribe communication model. तो यहाँ पे सब पब्लिश हो रहा है, डेटा सब कलेक्ट हो रहा है, ब्रोकर उस हिसाब से उस डेटा को अवेलेबल करा रहा है और उस हिसाब से सब्सक्राइब करके हम लोग यूज कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज पब्लिश सब्सक्राइब कम्युनिकेशन model. Okay, now next is push pull communication model. Now what is happening in push pull communication model? Now in push pull communication model the data producer push the data to the queues, यहाँ पे डेटा सब क्यू में डाल देते हैं। एंड देन नेक्स्ट जो कस्टमर को चाहिए वो डेटा उसमें से वो पुल करते रहता है जो उसको डेटा चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल जैसे यूट्यूब का डेटा, अब यूट्यूब पे क्या है, सब वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, हम सब वीडियोस अपलोड करते जा रहे हैं। अब कस्टमर को जो चाहिए वो वीडियो वहां से पुल करता है यूट्यूब के सर्वर में से। सो यूट्यूब के सर्च इंजन में जाता है, टाइप करता है मुझे IoT पेड लेक्चर चाहिए, तो IoT के वीडियो सारे आ जाएंगे। अब उसमें से आपको जो चाहिए आप देख रहे हो कस्टमर, तो दिस इज कॉल्ड एज पुश पुल कम्युनिकेशन मॉडल। मैंने पुश किया, यूट्यूब वाले ने पुश करा, या किसी
बंदे ने वीडियो बनाया और उसने यूट्यूब पे डाल दिया, पुश कर दिया। अब वो वीडियो उसका इंटरनेट पे यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब वो क्यू में आ गया है, मतलब स्ट्रीमिंग में आ गया है। अब कस्टमर बैठा है, उस कंज्यूमर को चाहिए एक पर्टिकुलर वीडियो, तो वो वहां से पुल कर लेता है, वो शायद मेरा वीडियो पुल कर लिया। तो इसे बोलते हैं पुश पुल कम्युनिकेशन मॉडल। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सक्लूसिव कम्युनिकेशन मॉडल। नाउ एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन मॉडल इज अ बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। अभी तक जो आप देख रहे थे खाली ए वन वे कम्युनिकेशन था, कंज्यूमर नहीं कम्युनिकेट कर रहा था पब्लिशर से। So now in this what is happening? It is a fully duplex communication model that uses a persistent communication between the client and the server. Now this connection is open till the client जो है कनेक्शन स्टॉप नहीं करता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा है टू सेटअप अ कम्युनिकेशन, कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, रेस्पॉन्स एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट। नाउ मैसेज फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर एंड द मैसेज फ्रॉम server to client is being sent. After the communication is done between the server and the client, the connection close request is being sent by the client and the connection close response is sent by the server to the client. So this is called an exclusive pair communication model. ठीक है? So this is again a communication model available in IoT. Now, depending upon the application, out of these four models, any one model is being selected. So for example, we see some scenario where this communication protocol can be model can be utilized. The first one is network size and complexity. If the network size is huge and complex, that is for example large network है, so where there we use the benefit of publish, subscribe or push pull model for scalability. अब आप देख सकते हो पुश पुल में, पब्लिश एंड सब्सक्राइब में क्या बेनिफिट है। अब आप इधर कितने भी टॉपिक बनाते जाओ, ब्रोकर विल कीप ऑन। अब यहाँ पे देखो कस्टमर, आप कितने भी कस्टमर ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग जो मॉडल यूज करते हैं कम्युनिकेशन का, वेब सीरीज का, जो नेटफ्लिक्स है, सोनी लिव है, हम लोग क्या करते हैं, हम ब्रोकर को सब्सक्राइब करते हैं, पब्लिशर पब्लिश करते जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन दी आवर नीड वी सब्सक्राइब टू दी चैनल। जैसे हम लोग चैनल लेते हैं, नेटफ्लिक्स सोनी लिव लिया, किसी ने सोनी लिव स्टार स्पोर्ट्स का लिया, किसी ने स्टार स्पोर्ट्स जियो स्टार का लिया। तो सब्सक्राइबर तो किसी भी चीज को सब्सक्राइब कर रहा है, पब्लिश सब एक जगह से हो रहा है। तो ये पब्लिश एंड सब्सक्राइब मॉडल एक वेरी लार्ज और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के लिए यूज किया जा सकता है। सो हम सेकंड देखते हैं, नेटवर्क साइज अगर बड़ा है तो आप ये समझ लीजिए कि जब नेटवर्क साइज इज बिग एंड कॉम्प्लेक्स, बिकॉज इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, live streaming, video channels, because there are huge connections, many subscribers are there. So then publish, subscribe or push pull model is used. जैसे YouTube का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, big network, huge, many people are uploading YouTube videos and the customers are also available who are accessing the YouTube channel and continuously collecting the data from that. Next is if data volume and frequency is very high volume and real-time data might require, again in this you can see push pull and exclusive pair model is needed. डेटा वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं यूट्यूब में बहुत फ्रीक्वेंसी, इतना ज्यादा एक्सेस होता है यूट्यूब चैनल, तो आप देखो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। तो वहां पे जो कम्युनिकेशन मॉडल यूज किया जा रहा है, तो अगर आपके पास एक IoT डिवाइसेस बना रहे हो जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल और मॉडल बहुत ज्यादा है,
और डेटा फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, डेटा वॉल्यूम भी ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, तो एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल और पुश पुल मॉडल इज यूज। लास्ट इज डिवाइस कैपेबिलिटी एंड रिसोर्स कंस्ट्रेंट। अगर हमें कोई डिवाइस बहुत लो कंस्ट्रेंट पे चलाना है, तो हमें सिंपल डिवाइसेस माइट बी लिमिटेड टू क्लाइंट सर्वर मॉडल। जो सबसे पहले क्लाइंट सर्वर मॉडल हमने देखा था, जहां पे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा और उसके हिसाब से रिसोर्सेज प्रोवाइड किया। तो बेस्ड ऑन दीज थ्री रिक्वायरमेंट, you can select the communication model for IoT. सो अभी तक का टॉपिक क्लियर है? कुछ डाउट है मुझे बता सकते हो? यस स्टूडेंट। हेलो, Hello. आवाज। I'm audible. हाँ, Hello. लिटिल लाउडर। Everything is clear, sir. ओके, नाउ वी विल गो विद द वन मोर स्लाइड, वन वन पॉइंट, एंड देन वी विल एंड विद द सेशन। हाँ, दिस इज द मेन योर सब्जेक्ट टॉपिक। नाउ व्हाट इज इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग? So now we have studied IoT devices, IoT. It is a same an extended version of IoT. And this was basically introduced by Cisco. In this, till now, we have seen that machine to machine communication is there and the human being is not interface in that. अब यहाँ पे क्या है कि मशीन मशीन एंड ह्यूमन बीइंग तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगे। जब आप पीपल को इन्वॉल्व कर देते हो कि वो कम्युनिकेशन में आ जाता है, मतलब, तो दैट इज कॉल्ड इज इंटरनेट फॉर एवरीथिंग। अभी तक क्या देख रहे थे कि हम उसमें ह्यूमन बींग का कोई इंटरवेंशन नहीं था, डेटा मशीन से मशीन आ रहा था और हम लोग खाली देख रहे थे। अब यहाँ पे क्या, ह्यूमन बींग भी आ जाएगा। ओके, सो यू कैन सी गोज बियॉन्ड स्कोप। क्या है? गोज बियॉन्ड थिंग्स। इस थिंग से भी बियॉन्ड, मतलब ऑब्जेक्ट से भी बियॉन्ड जा रहा है। दैट इज ह्यूमन इंटरेक्शन इज देयर, बिजनेस प्रोसेसेस इज देयर एंड डेटा एनालिटिक्स। ये तीनों का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ हेल्थ सिस्टम का। एक पर्सन है जिसको डायबिटीज है और उसका डायबिटीज इज वेरी क्रिटिकल, मतलब उसको कंटिन्यूस मॉनिटर करना है। तो एक फिटबैंड हम लगाते हैं जो कंटिन्यूसली उसके डायबिटीज लेवल को चेक करता है, and that information from the feedback is transmitted wirelessly to the hospital। मैं हॉस्पिटल पे वो सिस्टम में डेटा उसका आ रहा है, ह्यूमन का, उस पर्सन का पूरा ब्रीफ हिस्ट्री, हेल्थ का पूरा हिस्ट्री उसमें है, अवेलेबल है। अब वो डेटा कंटिन्यूसली उधर में मॉनिटर हो रहा है। बाई चांस अगर जो डायबिटीज लेवल है उसका बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इमीडिएटली हॉस्पिटल से जो डिवाइस है जिसमें ह्यूमन का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वहां से एक अलर्ट सिस्टम आता है, मैसेज आता है टू द डॉक्टर that so and so patient has got a diabetes level above that level and critical emergency intervention is required by the doctor। इमीडिएटली उसको देखना है डॉक्टर को, तो मैसेज आ गया डॉक्टर को, जो उसका डॉक्टर उसको पहले से हिस्ट्री से देख रहा है, उसको मॉनिटर कर रहा था। अब वो डॉक्टर उसको अटेंड करने के लिए अवेलेबल है हॉस्पिटल में नाउ इमीडिएटली, क्योंकि उसको मैसेज मिल चुका है। आप पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर आना है, तभी इमीडिएटली अलर्ट मैसेज एम्बुलेंस को भी जाता है कि यू नीड टू गो टू दिस पर्सन। मतलब एम्बुलेंस में जो ड्राइवर है उसको इन्फॉर्मेशन आता है कि यू नीड टू गो टू दैट लोकेशन, यू हैव टू पिक अप दैट पेशेंट एंड ड्रॉप इट टू द हॉस्पिटल। तो उसी वक्त इमीडिएटली एम्बुलेंस भी निकल जाता है वो पेशेंट को पिकअप करने। तो आप यहां पे देख रहे हो कि पीपल इज इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम। तो ये जो सिस्टम बना है
इसको बोला जाता है इंटरनेट फॉर एवरीथिंग। एवरीथिंग, ऑल हैव बीन इन्वॉल्व। उसी तरह अगर पर्सन को हार्ट डिजीज है, उसकी हार्ट बीट बहुत हाई हो गई है, इमीडिएटली लेवल के ऊपर गया है, मैसेज गया हॉस्पिटल को, हॉस्पिटल को मैसेज आता है, डॉक्टर को अलर्ट मैसेज जाता है, इमीडिएटली हॉस्पिटल को भी मैसेज आता है, हॉस्पिटल से वैन, हॉस्पिटल एम्बुलेंस इमीडिएटली जाती है, वो लोकेशन में उनको पिकअप करती है और वो हॉस्पिटल में ड्रॉप कर है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना ज्यादा फास्ट सिस्टम होगा और कितना प्रॉब्लम, जो रिस्क ऑफ लाइफ है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि अगर वो फीडबैक यूजर के पास नहीं होता और उस बंदे के करीबी कोई रिलेटिव नहीं होते, तो वहां वो रिलेटिव उनके पास जाने तक, वो फोन करके हॉस्पिटल में इंफॉर्म करने के लिए, फिर हॉस्पिटल से डॉक्टर अवेलेबल है नहीं है उसको इंफॉर्म करना है, फिर एम्बुलेंस को इंफॉर्म करना है, एम्बुलेंस जाएगी, तो देर इज अ लॉट ऑफ टाइम बीइंग वेस्टेड और देर इज अ रिस्क ऑफ लाइफ। एंड विद दिस इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग यू कैन सी, यू कैन सेव द लाइफ ऑफ द पर्सन। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, रिलेटिव बाजू में है या नहीं है, वो फीडबैक से ही मैसेज चला गया है, अलर्ट मैसेज हॉस्पिटल में गया है, डॉक्टर को भी गया है, और डॉक्टर के बाद वो एम्बुलेंस को भी गया है कि यू नीड टू कम एंड इमरजेंसी पिकअप करो। सब पैरेलल हो रहा है इमीडिएटली। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि हम फोन करेंगे एम्बुलेंस वाले को या हॉस्पिटल में फोन करेंगे, हॉस्पिटल वाला एम्बुलेंस को ढूंढते बैठेगा कि एम्बुलेंस अवेलेबल है कि नहीं है, या कहीं दूर है हॉस्पिटल से, तो हॉस्पिटल जाने की बजाय वो एम्बुलेंस डायरेक्टली उस पर्सन के पास घर पे जाके उसको पिकअप कर सके। इज दैट क्लियर? यू कैन सी द स्मार्ट सिटीज where sensor, citizen participation, governance, data work together, healthcare system, integrating patients, medical devices, hospital workflow, and AI data. Okay, these are the examples of internet for everything. Now we'll see some comparison between the internet of things and internet of everything. Now you can see it focus for internet of things is device objects connected to the internet. उसका focus खाली device object internet पे connected है या नहीं, ये internet of things का focus होता है। और internet of everything का क्या है, people plus processes plus data plus things, all, everything, वो बन जाता है internet of everything। ये क्या है, नैरो, मशीन टू मशीन, ये ब्रॉडर है, मशीन प्लस ह्यूमन प्लस मशीन प्लस डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है कि वो पेशेंट्स का जो हिस्ट्री है वो भी वो एनालाइज करेगा कि ये कितना उसका पहले का बीपी लेवल था, या सपोज डायबिटीज लेवल था, अभी करंटली क्या उसका डायबिटीज लेवल है, बिकॉज बेस्ड ऑन दैट द अलर्ट इज बीइंग जनरेटेड टू द डॉक्टर, टू द एम्बुलेंस टू पिक अप द पेशेंट। That means the data is also being integrated. Past history data is also integrated, and where the AM and ML model will work and to analyze the data, predict the data based on the current streaming of data जो आ रहा है। ठीक है ना? The next, for connected devices. From connected devices value creation है from combining insights across people, data, things and process. एग्जाम्पल में स्मार्ट होम है, वेरिएबल सेंसर्स है, एंड इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग में स्मार्ट सिटी है, कनेक्टेड हेल्थ केयर इकोसिस्टम। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट एवरीथिंग। सो you have got a brief about the internet of everything now, what exactly internet of everything, and now in the further syllabus only we will be studying first internet of things. Internet of everything is just adding the people in between as well as the data which is a past history of the system। ये दोनों चीजों को भी इंक्लूड कर दिए तो वो इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग हो गया। पहले इंटरनेट ऑफ थिंग क्या था, एक डिवाइस रिमोटली मॉनिटर्ड हो रहा है बस, दैट वाज इंटरनेट ऑफ थिंग। मतलब मुझे किसी
डिवाइस को कंट्रोल करना है रिमोटली वाया सेंसर, उसके वैल्यूज को देख के कंट्रोल करना है, बस वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। यहां पे क्या है कि पीपल का इंटरवेंशन है। डेटा जो पास हिस्ट्री डेटा अवेलेबल है वो भी आ रहा है, उसको देख के एनालिसिस करके डिसीजन लिया जा रहा है। सो दैट वाज इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। सो आगे हम लोग इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे, दैट इज आईओटी आइडेंटिफायर्स क्या है, आईओटी की टेक्नोलॉजीज क्या अवेलेबल है। ओके, सो व्हेन वी कवर दीज ऑल टॉपिक, आपका एक चैप्टर ये फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन ऑफ आईओई है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई क्वेश्चन आपको डिफिकल्टी है तो मुझे बता सकते हैं। यस। यस स्टूडेंट, एनी क्वेरी? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं सेशन। और प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, कल मंडे की दिन आप लोग अवेलेबल है 3:30 बजे, तो हम लोग ऑफलाइन में ले सकेंगे लेक्चर। यस। ठीक है, फिर हम लोग कल मैं ये रिकॉर्डिंग भी उसमें डाल देता हूँ गूगल क्लासरूम में।